in blue. In fact, looks like more of blues than greens here. And with their sun hats, everyone has come here to enjoy a wonderful day of play. Lots of people coloring the tricolor on their cheeks, on other parts of their body, and they will be here to cheer every over, every wicket. And as you mentioned, Mohammad Shami and Umesh Yadav had a devastating effect on the top order of the South Africans, as the two South African overnight batsmen, the night watchman Nokia and Tynus de Bruyne, making their way in the middle. It will be a big day for De Bruyne because he is a good player. He's a very, very talented player, but hasn't really got those many opportunities. He has got a test 100 to his name, but today is the moment for him. Today is the opportunity for him, and of course for the likes of young baby-faced De Kock and Captain Faf du Plessis, that they will have to rise to the occasion. Mind you, they did that. Can they do it in Pune is the big question. शमी की ये अगली गेंद इस बार अंदर की तरफ और लेग स्टंप पर शानदार तरीके से ऑन ड्राइव किया इसे डे ब्रुयन ने। गेंद सीमा रेखा पार कर गई है 4 रन के लिए। दर्शनीय स्ट्रोक इन स्विंग थी, हालांकि अच्छा लहराव था इस गेंद में, मगर टिप्पा ओवर पिच, और ये कारण काफी डे ब्रुयन के लिए कि इस बार फिर से देखना है कि किस तरह से वापसी करेंगे इस चौका लगने के बाद। ओवर द विकेट डे ब्रुयन के लिए ये गेंद, अच्छी गेंद, गुड लेंथ स्टंप पर, हवा में बिल्कुल सीधी रहती हुई, टिप्पा खाने के बाद भी सीधी रही। सीधे बल्ले से सुरक्षात्मक तरीके से गेंद की पिच पर आकर डे ब्रुयन ने खेला इसे बगैर किसी रन के। अच्छा फुटवर्क है डे ब्रुयन का। कल एक बैकफुट ड्राइव कमाल का स्ट्रोक खेला था उन्होंने उमेश यादव की गेंद पर, और 2 फ्लिक शॉट, एक आज सुबह और एक कल जिस पर चौका लगाया था मिड विकेट क्षेत्र से। ये दर्शाता है कि अच्छी तकनीक और अच्छे फुटवर्क से बल्लेबाजी करते हैं डे ब्रुयन, मगर देखना यह है कि उनमें क्या मादा है, टेम्परामेंट है भारत के आक्रमण को झेलने का और लंबी पारी खेलने का, जिसकी की जरूरत इस समय दक्षिण अफ्रीका को। मोहम्मद शमी ओवर द विकेट, अगली गेंद, इस बार गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर और निर्णय करना काफी आसान कि इस गेंद के साथ छेड़खानी न की जाए, और जाने दिया इसे वृद्धमान साहा के दस्तानों में। 3 स्लिप पे गली, बैकवर्ड पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑन पर हैं ईशांत शर्मा, शॉर्ट मिड विकेट पर रविचंद्रन अश्विन, डीप फाइन लेग पर हैं उमेश यादव। ये फील्डिंग का फैलाव है डे ब्रुयन के लिए। मोहम्मद शमी जो कि अच्छी गति से गेंदबाजी करते हैं और अच्छा सीम होता है गेंद उनका, जो उछाल मिलता है उस सीम से वो परेशानी में डालता है बल्लेबाज को। इस ओवर में अपने आक्रमण को ऑफ स्टंप और उससे बाहर रखे हुए एक कमजोर गेंद थी जिस पर 4 रन लगाए डे ब्रुयन ने। इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट, मोहम्मद शमी की एक बार फिर से अच्छी गेंद, आउट स्विंग थी इस बार, टिप्पा खाने के बाद और बाहर जाती हुई, और इसे खेलने का प्रयास नहीं किया। 40, 3 विकेट पर साउथ अफ्रीका। 16 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 2 पर है नौकिए और 24 पर डे ब्रुयन। Yes, Birinder, more and more spectators are trickling into this beautiful ground, the Maharashtra Cricket Association International Stadium at Gahunje in Pune, just on the outskirts of Pune, and the buzz in around Mumbai and Pune city is let's head to Gahunje today for a wonderful dose of test match cricket on the weekend, over the weekend, as South Africa 40 for the loss of 3 wickets. De Bruyne on 24, and out of these 24 runs, Birinder, 20 runs have come off boundaries. So he is looking strong, but he will have to be rock solid today because and also throughout the evening after the day's play yesterday, he must be sitting
and thinking about just one thing: how will I be able to spend the entire day for my team in the middle? That's the only way things can happen for South Africa. But at the other end is young debutant Henrik Notke, who bowled his heart out but didn't get any wickets. But now it's an opportunity for him to play a very significant role as a night watchman, as Umesh Yadav gets ready to bowl from the far end. He has 3 slips, in fact 4 slips, a gully, point and a fielder at cover. Here comes Umesh Yadav, first ball on the middle stump, played confidently back to the bowler by Nokia. Virendra, the pitch also looks pretty good. I mean, it has held itself pretty well. I guess the grass which was left there on day one has binded the soil pretty well. It didn't rain last evening. It did rain a day before, late in the night. So there's a bit of moisture. So overall, it's not really cracked because it's been baking for the past 2 days in the afternoon. So it's good to see this pitch holding itself pretty well as Umesh Yadav gets ready for the next ball. This time on the middle stump, wanted to work it on the onside, wrapped on the pads, but on the front foot. So no damage done, but nervous moments for the night watchman. नौकिए को ये देखना है कि पंकज तेज गति की गेंदबाजी उन्हें करनी तो आती है, तेज गति की गेंदबाजी झेलनी आती है कि नहीं, सामना करना आता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी. We will also talk about his first-class performances back home in South Africa, but Henrik Nokia would be saying, why are you sending me up the order? The batsman should be doing the job. Okay, I'm the young man, I'm the new man. I will have to take this responsibility. Here comes Umesh Yadav outside the off stump, opening the face of the bat, trying to run it towards third man, finds Mayank Agarwal at 4th slip. So good to see young Henrik Nokia trying to fight it out for his team, and South Africa need some attitude in the middle if they have to make a match out of this. और नौकिए अगर विकेट पर समय गुजारते हैं, विशेष तौर पर पहला घंटा, तो ये साउथ अफ्रीका के लिए काफी देखना ये है कि भारत कब निपटता है नौकिए से. And if you talk about jobs and KRAs, what is the KRA or a job profile of a night watchman? I mean, it's pretty interesting. We have had very interesting players who have done the job of the night watchman for South Africa. Maybe Nicky Boy used to do it on occasions. In India, probably Javagal Srinath or someone has also done a decent job. But now, the 4th slip has been taken off, and 3 slips a gully. There's a fielder at point. There is Ishant Sharma in the covers, and I guess Mayank Agarwal will be asked to come a bit close in to the batsman. I guess it should be in the forward short leg area. So now Umesh Yadav is trying to create some doubt in the mind of Nokia. India are sensing that Nokia is the weaker link here. Let's attack him, get the wicket, and then run through the middle order. That should be the plan of action as far as this morning is concerned. Day 3, session 1. Umesh Yadav bowls on the legs, nicely flicked. Decent stroke towards the fine leg for a single. And that will give Nokia a lot of confidence. His first run of this day. 41 पर 3 साउथ अफ्रीका इस समय, और हमारे स्टैटिस्टिशियन ने भी आज का पहला रन लिया है. हमें बताया है कि डिब्रून 4 दिन पहले 8 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मना चुके हैं. 27 वर्ष के हो गए हैं वो, और 16 नवंबर को नौकिया अपना 26वां जन्मदिन मनाएंगे. So brother in arms, probably they must be in school together, the same standard, and they must have done a lot of work together, and now they will have to do it all over again. But a lovely morning for Test match cricket. 41 for 3, South Africa, as Umesh Yadav steams in hard from the far and over the wicket. Lovely drive there by De Bruyne. Straight to the fielder, that's Ashwin at mid-on. De Bruyne looks quite competent, quite technically right. His flow of the bat is also pretty good, and his stance looks like a balanced player. बिल्कुल सही कहा पंकज, आपने अपनी मेरिट पर खेल रहे हैं. वो कमजोर गेंद पर स्ट्रोक लगा रहे हैं, और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद के साथ छेड़खानी नहीं, स्टंप के बीच आती गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेते हुए खेल रहे हैं विश्वास के साथ. De Bruyne gets ready to face Umesh Yadav. Once again on drive, nicely leaning into it, straight to mid-on. There, Ashwin is there. So De Bruyne remains on 24. Umesh Yadav, 5 overs for him, a maiden, 2 for 17.
And South Africa 41 runs for the loss of 3 wickets. Everything went right for India in the first 5 sessions in this particular test match. They did well. Virat Kohli with that majestic, lovely double 100, and he must have got so much of confidence. What a classy player that he is. And then when India came out to bowl, the bowlers Umesh Yadav as well as Mohammad Shami did a fantastic job. And you mentioned about Ishant Sharma also. I guess he is more in the role of blocking one end so that the bowler from the other end can use that pressure to take the wickets. I guess it's good to see that the Indian trio of fast bowlers is actually, distributing the workload among itself. Unfortunately, we all see numbers, so we only see the bowlers who have taken the wickets. But Ishant Sharma is keeping the pressure up from one end. मोहम्मद शमी नए ओवर की शुरुआत करेंगे। नौकी उनके सामने हैं, जिसकी वजह से आक्रामक फील्डिंग लगाई गई है। फॉरवर्ड शॉर्ट लेग के स्थान पर एक फील्डर हैं, 5 फील्डर स्लिप के स्थान पर। और ये मोहम्मद शमी की पहली पटकी हुई गेंद, बाउंसर था मिडिल स्टंप पर, अच्छा बाउंसर, मगर अच्छी तरह से उसे छोड़ा भी नौकी ने। एक तरफ हट गए थे गेंद की लाइन से और जाने दिया इसे रिदवान साहा के लिए। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी नजर है गेंद पर उनकी, और वो धीरे धीरे बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ तेज गति की गेंदबाजी करनी ही नहीं आती उन्हें, गेंदबाजी को झेलना भी आता है। गेंद की लंबाई को भी अच्छे से भांप लेते हैं वो। अब तक जितनी भी बल्लेबाजी हुई है आज के दिन नौकिए की तरफ से सिर्फ एक गेंद उनकी पैड से टकराई है और बाकी की गेंदों पर ठीक से सामना किया है। अब देखना यह है कि कितना वक्त गुजार पाते हैं क्रीज पर। मोहम्मद शमी ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं नौकिए के लिए अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर। ये गेंद एक बार फिर से शॉट ऑन कैच और लपक लिया गया कप्तान विराट कोहली द्वारा। नौकिए वापस जा रहे हैं आउट होकर। शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, ऑफ स्टंप पर बैकफुट पर जाकर इसे खेलना चाहते थे। गेंद बल्ले के कंधे पर लगी, किनारा लेती हुई स्लिप के स्थान पर गई और विराट कोहली ने चुस्ती और फुर्ती से डाइव किया अपनी दाईं तरफ और इस तरह से इस कैच को लपका और ये चौथा विकेट गिरा साउथ अफ्रीका का। Virinder, this was designed to perfection. The first ball, short of length, where Nokia was surprised. He sort of ducked it as if he was sweeping and trying to get away very desperately. And Mohammad Shami knew what was going on in the mind of young Nokia, who's a night watchman, not really a fully accomplished batsman. You bowl a short of length delivery, and Nokia was a bit late on it, and he just could give the face of the bat. And what a simple catch! Beautifully designed wicket here by Mohammad Shami. 41 for 1. 41 for 4, beg your pardon, South Africa. तो नौकिए अभी अभी आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं। ये है महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम पुणे की ताजा खबर। मोहम्मद शमी हैं सफल गेंदबाज जिन्होंने आज की पहली सफलता और इस पारी की दूसरी सफलता प्राप्त की है। 4 विकेट्स गिर चुके हैं साउथ अफ्रीका के, 2 विकेट्स प्राप्त किए हैं उमेश यादव ने और 2 विकेट्स मोहम्मद शमी ने। काल की गेंदबाजी, एक दबाव बनाया गया नौकिए के ऊपर और उन्हें ये जताया गया कि आप इस गेंदबाजी का सामना नहीं कर सकते, बेहतर यही होगा कि आप वापस पवेलियन लौट जाएं। और एक शॉर्ट पिच गेंद पर कैच स्लिप में पकड़ाकर वापस लौट गए नौकिए और अब मैदान में आ रहे हैं साउथ अफ्रीका के कप्तान फैफ डु प्लेसी, जिनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी अपनी टीम को इस मुश्किल से निकालने की और उनका साथ दे रहे हैं डिब्रन, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं 24 पर। दोनों बल्लेबाजों में विचार होता हुआ और ये एक इरादा बनता हुआ कि चाहे हालात मुश्किल हैं, परिस्थितियां मुश्किल हैं, मगर हम इनका सामना करेंगे और भारतीय गेंदबाजी को जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखना यह है कि कब तक और कैसा जवाब दिया जाता है। फैफ डु प्लेसी अंपायर से अपना लेग गार्ड लेते हुए 3 स्लिप, एक गली, पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट और डीप फाइन लेग। ये है फील्डिंग का जवाब फैफ डु प्लेसी के लिए, जो कि 59 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, 100 पारियां खेली हैं अब तक उन्होंने और 3676 रन टेस्ट क्रिकेट में बनाए हैं। 20 अर्धशतक हैं, 9 शतक हैं, 42.84 की औसत से उन्होंने रन बनाए हैं। विशाखापट्टनम टेस्ट में पहली पारी में 55 रन की पारी खेली थी उन्होंने। इस श्रृंखला में अब तक लंबी पारी नहीं खेल सके हैं वो। अब देखना है कि यहाँ कुछ कर पाते हैं कि नहीं, जबकि हालात मुश्किल हैं। पहले घंटे में गेंद थोड़ा सीम कर रहा है, इसका सामना करना थोड़ा मुश्किल। मोहम्मद शमी फैफ डु प्लेसी के लिए अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप पर सीम हुई, अच्छा उछाल। आखिरी वक्त में ये इरादा किया इस गेंद को ना खेलने का। अब देखना यह है कि बल्ले से लगकर गई है गेंद कि छोड़ी थी और रिदवान साहा से पकड़ी नहीं गई थी, बल्ले पर लगकर गई थी ये गेंद, किनारा लेती हुई फाइनल लेग बाउंड्री की तरफ
हालांकि इस गेंद को खेलना नहीं चाहते थे, सीम हुआ ये गेंद और बल्ले के किनारे से लगता हुआ फाइन लेग सीमा रेखा से पार हो गया 4 रन के लिए। 45 रन साउथ अफ्रीका 4 विकेट पर। आते ही स्वागत किया गया है इस सीम बॉल से फैफ डु प्लेसी का, उनको ये बताने के लिए कि आक्रमण की धार पैनी है और मुस्तैदी से सामना करना होगा आपको इसे। फैफ डु प्लेसी तैयार मोहम्मद शमी की अगली गेंद का सामना करने के लिए। ओवर द विकेट मोहम्मद शमी एक बार फिर से फैफ डु प्लेसी के लिए। ये गेंद इस बार इन स्विंग, गुड लेंथ, अंदर की तरफ आती हुई ऑफ स्टंप पर और इस बार सुविधा से सीधे बल्ले से सुरक्षात्मक तरीके से गेंद की पिच पर आकर खेले और गेंद को बल्ले के बीचों बीच दिया। आते ही पंकज, जब बल्ले के बीचों बीच बल्लेबाज की गेंद लगती है ना, तो ये एक विश्वास देती है उसे और ये एक भरोसा जताती है कि आप टिक सकते हैं इस विकेट पर, लंबी पारी खेल सकते हैं। Yes, but if you describe the first ball that Faf du Plessis faced, very uncertain, hesitant about leaving. Dean Elgar was out in a similar manner. Is it because of a lot of T20 and ODI cricket that the batsmen don't know when to leave the ball? मोहम्मद शमी एक बार फिर से, इस बार ये गेंद एक बार फिर से सीम हुआ, ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाया, काफी उछाल था इस गेंद में और इस गेंद को खेलने का प्रयास किया। अच्छा निर्णय फैफ डु प्लेसी का। हालांकि पहली गेंद को खेलते हुए थोड़ा सा हड़बड़ाए थे वो और चकित किया था उस गेंद ने उन्हें, मगर तब से ये अगली 2 गेंदें अच्छी तरह से खेलते हुए, जांचते हुए। स्थिति मुश्किल है इस समय साउथ अफ्रीका के लिए। हालांकि दूसरे छोर पर डिब्रुन और एकाग्रता से बल्लेबाजी करते हुए विश्वास में दिखाई दे रहे हैं, बीट नहीं हुए हैं अभी और कमजोर गेंद पर स्ट्रोक भी लगाए हैं उन्हें, मगर सफर अभी काफी लंबा है और देखना है कि ये तय कर पाते हैं कि नहीं। फैफ डु प्लेसी एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। मोहम्मद शमी का ओवर द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी। हालांकि टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई थी ये गेंद, मगर इतनी बाहर की स्टंप के नजदीक आने का कोई सवाल नहीं और इसे छोड़ दिया गया। ओवर समाप्त, 45 4 विकेट पर साउथ अफ्रीका। 18 ओवर्स के बाद 24 पर है डिब्रुन और 4 पर फैफ डु प्लेसी। So Birinder, India has got a wicket in the South Africa are further going down the barrel, and they're looking down the barrel. They're also under a lot of pressure. Also the fact that is it because of too much of T20 and one day where the batsmen have got so used to playing the strokes that there is that half a second or a very minor hesitance which always is visible. Dean Elgar, we saw, wanted to play at it, then decided to leave the ball and then he got out. Du Plessis was also in a similar situation. We have seen KL Rahul struggling with that kind of a thing where he actually goes for commits himself for the stroke and then tries to leave it and has got an inside edge a lot of times. De Bruyne gets the first ball of a new over from the far end from Umesh Yadav on the off stump, and he plays that ball, pushes that ball towards point to Jadeja, 5 for 4. So that very minor hesitance is becoming an issue. बिल्कुल सही कहा। और इधर विराट कोहली ने नोकिया का कैच लपका था पंकज, और हमारे स्टैटिस्टिशियन दिलीप सिंह ने भी एक आंकड़ा लपका। ये बता रहे हैं कि विराट कोहली ने ये टेस्ट क्रिकेट में 76वां कैच पकड़ा था और उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने भी टेस्ट क्रिकेट में 76 कैच लपके। Outside the off stump left by De Bruyne. Good line there by Umesh Yadav. So lots and lots of numbers. So the Indian team has kept our scorer Sunil Dighe and our statistician Dilip Singh Upring very busy. And these numbers really help us get you the colourful description. We try and get you in the ball by ball running commentary on All India Radio. A lovely, beautiful morning, a sunny morning, a perfect weekend to start some test match consumption. And it's good to see that people are coming in large numbers here at the Maharashtra Cricket Association International Stadium. Lovely drive through the covers by De Bruyne for an open delivery. Ishant Sharma is running after it. The ball is reaching towards the fence, slowing down, but Ishant Sharma will not be able to cut it off. A boundary there. The 6th one for De Bruyne. Out of 28 runs, 24 have come in boundary. So he is dealing, and he is looking pretty strong at one end. What he needs is support, someone to complement him at the other end, and yes, it should be Faf du Plessis. So South Africa 49 for 4, and yesterday we saw when Ravindra Jadeja walked out, his grip was orange, his gloves were orange. Today we see Du Plessis with a pink grip and pink gloves. Umesh Yadav goes the next one on the middle stump, slightly short of length. De Bruyne wanted to work it on the onside, over off his front foot, finds Mayank Agarwal, no run on that occasion.
So things have become colorful, grips have become colorful. Of course, you have to wear whites. Apart from that, the numbers written on the jerseys are colorful. India with the blue jersey numbers and South Africa with the green jersey numbers. So lots of novelties in Test match cricket. बिल्कुल, और फैफ डुप्लेसी के दस्ताने गुलाबी हैं आपने बताया, और जो ग्रिप है वो भी गुलाबी है, मगर वो दुआ कर रहे होंगे कि लाल रंग उनको रास आए. Let's see whether the red cherry has to say something. Outside the off stump, lovely drive through the covers of the back foot, but good fielding by Ravindra Jadeja. De Bruyne is timing the ball pretty well. That's good to see. That will give him loads of confidence. And his body language looks very positive. He has come here with a resolve and he's playing pretty nicely, calm head on his shoulders. But how long can this happen? Will the heat, will the sun bake that calmness and convert it into nervousness? But South Africa would be expecting De Bruyne to play a longer innings. Outside the off stump, good one. Just back of length and trying to tease the batsman into going for a drive. But De Bruyne, very firm, lets it go to the keeper. And that is the end of the 90th over of the South African innings. And South Africa 49 for 4. The only casualty for the day for them, the night watchman, Anrik Nokia. 49 पर 4 है साउथ अफ्रीका 19 ओवर्स के बाद. फैफ डुप्लेसी हैं 4 पर, 28 पर डे ब्रुयन, और साउथ अफ्रीका को सख्त जरूरत है एक बड़ी और अच्छी साझेदारी की. और ये साझेदारी बनेगी, दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि जब सत्र दर सत्र खेला जाएगा और गेंद की मैरिट पर एकाग्रता से खेला जाएगा, गलती नहीं करनी होगी बल्लेबाजों को एक लंबी पारी खेलने के लिए. 3 स्लिप, एक गली और बैकवर्ड पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट और डीप फाइन लेग. ये जब आक्रामक फील्ड रखी जाती है तो एक तरह से तेज गति के गेंदबाज के ऊपर पर भी किसी ना किसी तरह का दबाव रहता है कि कमजोर गेंद नहीं फेंकती, क्योंकि गैप काफी ज्यादा है मैदान पर. इस बीच अच्छी गेंद मोहम्मद शमी की, एक बार फिर से अच्छी सीम करती हुई फैफ डुप्लेसी के सामने, और उछाल इतना ज्यादा था, हालांकि इतनी बाहर नहीं थी ये गेंद ऑफ स्टंप से, मगर इस गेंद को ना खेलने का निर्णय किया, जो कि सही और सटीक निर्णय. हालांकि स्टंप के ऊपर से ये गई थी गेंद, सीम होती हुई अंदर की तरफ आती हुई, और अच्छी गेंदबाजी. Virinder, it swung in further after passing the stumps. So another important point is this pitch, the track is really good. The Indian fast bowlers have used it much better than the South Africans. बिल्कुल सही कहा पंकज आपने, सही टप्पे पर गेंदबाजी की जा रही है. ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय तेज गति के गेंदबाजों ने नब्ज पकड़ ली है विकेट की कि किस जगह पर गेंद फेंकनी है, और इसीलिए परेशानी में डाल रहे हैं. मोहम्मद शमी ओवर द विकेट, एक बार फिर से, इस बार गेंद मिडल और लेग स्टंप पर, इसे फ्लिक कर दिया डीप फाइन लेग क्षेत्र पर. जब तक गेंद को भागकर फील्ड करके थ्रो करेंगे उमेश यादव, 2 रन बनाने का मौका फैफ डुप्लेसी के पास. 51 हुआ साउथ अफ्रीका का स्कोर. 19.2 ओवर के बाद 4 विकेट का नुकसान अब तक हुआ है 51 रन पर पहुंचने के लिए साउथ अफ्रीका का. मोहम्मद शमी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. ये एक पहली थोड़ी सी ढीली गेंद थी जिस पर रन बनाने का मौका मिला फैफ डुप्लेसी को. 6 फील्डर्स ऑफ साइड पर हैं, 3 फील्डर्स ऑन साइड पर हैं, और आक्रमण मोहम्मद शमी का स्टंप के बीचों बीच कमाल की सीम गेंदबाजी कर रहे हैं. टिप्पा खाने के बाद अच्छी अंदर की तरफ आ रही है, जो परेशानी में डाल रही है बल्लेबाजों को. इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, टिप्पा खाने के बाद सीधी रहती हुई, और इस बार इस गेंद को खेलने का प्रयास नहीं किया फैफ डुप्लेसी ने. फैफ डुप्लेसी जिनके पास टेस्ट क्रिकेट का काफी अनुभव है, और वो समझ रहे होंगे कि ये जो पहला सत्र है खेल का, पहला घंटा है ड्रिंक्स तक, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा. और जब गेंद की चमक कम होगी और विकेट और ज्यादा सख्त हो जाएगी धूप पड़ने के बाद, और ये जो मौसम में नमी है ये कम हो जाएगी, तब बल्लेबाजी करना और आसान हो जाएगा. तो इस समय शांत स्वभाव में एकाग्रता से बल्लेबाजी करना ही बेहतर रहेगा उनके लिए. मोहम्मद शमी ओवर द विकेट, एक बार फिर, इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, टिप्पा खाने के बाद अच्छी सीम हुई, अच्छा उछाल था इस गेंद में, गेंद की लाइन में आए, बैकफुट पर जाकर इसे सीधे बल्ले से खेला. कवर्स क्षेत्र पर फील्डर वहां पर मौजूद है, रन बनने की कोई संभावना नहीं. दूसरे छोर से डे ब्रुयन ने अच्छे गट्स, अच्छी बल्लेबाजी दिखाई है, अच्छे फुटवर्क के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, किसी तरह की जल्दबाजी में दिखाई नहीं दे रही, और एकाग्रता एकदम सही लग रही है उनकी. गेंद पर नजर रख कर बल्लेबाजी करते हुए, और अच्छे स्ट्रोक्स लगाए हैं अब तक उन्होंने. 52 गेंदों का सामना करने के बाद 28 पर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं. मोहम्मद शमी अपने ओवर की 5वीं गेंद फेंकने के लिए तैयार, ओवर द विकेट. इस बार फिर से अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, टिप्पा खाने के बाद सीम हुआ ये गेंद,
इछाल देखने को मिला और एक बार फिर से इसे खेलने का प्रयास किया। कलात्मक गेंदबाजी और भारत के पास तेज गति की गेंदबाजी का अच्छा मिश्रण है। मोहम्मद शमी जो कि अच्छी सीम गेंदबाजी करते हैं, उछाल है जिनकी गेंदों में, और दूसरे छोर से उमेश यादव जो अच्छी गति के साथ इन स्विंग गेंदबाजी ज्यादा करते हैं, और ईशांत शर्मा जो दोनों तरफ गेंद को स्विंग करवाने की क्षमता रखते हैं। तो अच्छा तालमेल, अच्छा मिश्रण है भारत के पास तेज गति की गेंदबाजी का। मोहम्मद शमी अपने ओवर की आखिरी गेंद फेंकने के लिए फैफ डु प्लेसी की तरफ आते हुए, इस बार अच्छी गेंद स्टंप, मिडिल स्टंप पर शॉर्ट ऑफ लेंथ बैकफुट पर जाकर इसे सीधे बल्ले से खेला। मिड ऑन क्षेत्र पर गेंद गई और वहां पर ईशांत शर्मा मौजूद हैं जिन्होंने आसानी से इस धीमी गति से लुढ़कती गेंद को फील्ड किया। 51 पर 4 साउथ अफ्रीका, 20 ओवर्स के बाद 6 पर है फैफ डु प्लेसी, 28 पर डिब्रन। A very good over from Mohammad Shami, and the South Africans would constantly now look at every sort of phase of a couple of overs played out. Let's see what happens, and that is what the strategy would be. But good to see that the Indians are continuing with their the pressure tactics, and South Africa, of course, have got a casualty in the form of Anrich Nokia. But if we talk a bit about this ground, Virinder, it's a very beautiful stadium. About 20% of the ground, the stands, exactly diagonally opposite to us, have 3 floors. The first level, the second and the third, those are filling up. Just on the top sort of berth of those stands are school kids who have come in large numbers. That stand is full, and apart from that, all the other stands are just one level, and those are also filling very fast. Good to see that parents, children, grandparents, all of them have come here today to watch this match and enjoy some lovely test cricket, as De Bruyne, who's batting on 28, gets ready to face Umesh Yadav, who will be bowling another fresh over from the far end. South Africa 51 for 4. 3 slips, a gully, point, cover, mid-off. Here comes Umesh Yadav over the wicket. Lovely punch off the back foot by De Bruyne between point and cover. Jadeja running after it. The ball is slowing down. The batsman will come back for 2 runs. The outfield is not really very fast. It's a sand-based outfield, so you'll not really have the ball after it sort of comes up on the turf. It will trickle down and slow as it moves towards the boundary, and that will give opportunities for the batsman to come back for 2 and 3 runs if they can really run hard. But with those 2 runs, South Africa has gone up to 53 for the loss of 4 wickets. And Umesh Yadav was bowling from the commentary box end yesterday. He has started from the far end today. We'll have to see how it works out for him. De Bruyne on strike, this time on the middle stump. Good ball, compact delivery. De Bruyne had to come on the front foot, bat together, and this ball didn't bounce a lot. So that's another, not really a cause of concern, but then the changing nature of the pitch that we can see here. Virat Kohli trying to make some changes in the field. Now the third slip has gone off. There are 2 slips and gully. Cheteshwar Pujara at first slip, Rohit Sharma at the second. Virat in gully. There's a point, cover, mid-off. There's a mid-on, short mid-wicket, and a deep fine leg. Here comes Umesh Yadav again. A delivery just on the off stump. Good lane. De Bruyne plays it back to the bowler. 53 for 4. And as it gets... Kahunje, the Maharashtra Cricket Association ground, the South Africans will have to keep their cool. They will have to just keep on playing for targets of 5 overs each. Just accumulate runs, sort of like an SIP. Just keep on investing time, invest your concentration, and you will get returns. Can India dent this? This time on the off stump, the ball slightly back of length, bouncing a bit after pitching. De Bruyne working it towards point where Jadeja is there. Good to see that De Bruyne has taken this opportunity. He started off well in Vizag, couldn't really convert it into a big score. But today, this is a wonderful opportunity. And at the other end, you have Faf du Plessis, the captain. He will have to emulate Virat Kohli. What Virat Kohli did for India, du Plessis will have to do that for South Africa. And about the other firepower in batting, they have Quinton de Kock. So South Africa need not really worry. They just need to apply themselves. As Umesh Yadav bowls, once again a defensive stroke played by De Bruyne. The kind of temperament De Bruyne has shown till now has been very, very positive. That's good to see from a young man, and he is sort of carrying the legacy of the likes of the Hashim Amlas and the Jacques Kallises
And South Africans have done that before. There, on numerous occasions in Australia, AB de Villiers and JP Duminy had that wonderful partnership going and got that match. They actually sort of carved their way out of trouble. And here comes. Oh, that's an outside edge, is it? De Bruyne gone. We were talking about how good his temperament is. Commentators curse. Another wicket falls. What a beauty of a delivery by Umesh Yadav. Just outside off stump, moving away. De Bruyne thought he had the width, tried to go for it. Not really enough room for him. Edged. Good catch there by the keeper. And that is the end of a decent innings from De Bruyne. Good start, couldn't make it big. 5th wicket down, so half the South African side is back in the pavilion. 53 for 5 after 21 overs. The first half hour has been very fruitful for the Indians. And for another fruitful session in the commentary box, please welcome Sunil Vaidya and Ronak Kapoor. बहुत बहुत धन्यवाद पंकज अठवले और बिरेंद्र सिंह। तो आज सुबह आते ही करामात दिखाना शुरू कर दी है भारतीय गेंदबाजों ने और कोई भी दफाज न टिक पा रहा है, न रुक पा रहा है, न किसी तरह की राहत महसूस कर पा रहा है। एक के बाद एक झटके दक्षिण अफ्रीका को लग रहे हैं और उन झटकों से उबरना अब खासा मुश्किल साबित हो रहा है। और ये बात तो अब लगभग तय है कि इस मैच में दक्षिण अफ्रीका अब बैकफुट पर है। उसे केवल इसको बचाने की ही जुगत करनी है, क्योंकि केवल 53 के कुल योग पर 5 विकेट हो चुकी है दक्षिण अफ्रीका की टीम। वहीं भारत ने 601 रन बनाए थे। एक पहाड़ जैसा लक्ष्य भारत ने खड़ा किया है और उसके सामने दक्षिण अफ्रीका की पारी लड़खड़ाती हुई, चरमराती हुई, और इस लड़खड़ाती पारी को संभालने के लिए कप्तान फाफ डुप्लेसी का साथ निभाने के लिए अब क्रीज पर आए हैं क्विंटन डी कॉक, विकेटकीपर बल्लेबाज, पिछले टेस्ट मैच के शतकवीर। और कमेंट्री बूथ में मेरा साथ देने के लिए आज सुबह पहली बार रौनक कपूर। गुड मॉर्निंग रौनक, स्वागत है आपका। Good morning, Sunil, and a very good morning to all our listeners wherever you're joining us from in India on All India Radio. And not a very good morning for South Africa's batsmen. And Sunil, once again, we must beg the question of lack of application, lack of determination, and that small ride of not having a batsman sent out last evening who could have seen out the evening. They could have still been 4 down. Now, even psychologically, half the side gone for 53 doesn't bode well for them. और ये नए ओवर की पहली गेंद मोहम्मद शमी की मिडिल और लेग स्टंप पर थी और इसे ठीक पीछे आकर डुप्लेसी से खेला ऑन साइड में मिड विकेट की तरफ। अश्विन वहां पर गेंद को फील्ड किया और वापस कर रहे हैं मोहम्मद शमी को। तो जो बात आपने की रौनक की, थोड़ी सी अनुशासन की नजर आई, लेकिन उससे भी बड़ी बात जो मुझे महसूस हुई कि भारतीय तेज गेंदबाजों ने सही टप्पे पर और सही दिशा पर और नई गेंद का, ठोस गेंद का और सुबह के सत्र का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो करके दिखाया। इस बीच अगली गेंद करने के लिए तैयार मोहम्मद शमी हमसे दूर भागते हुए कमेंट्री बॉक्स होल से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, फिर से बहुत अच्छी लाइन पर गेंद ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाकर बाहर की तरफ निकलती हुई और डुप्लेसी ने उस गेंद को नजदीकी नजर रखते हुए छोड़ दिया विकेट कीपर रिद्धिमान साहा के लिए और गेंद वापस आ रही है मोहम्मद शमी के पास। तो 5 विकेट अब तक निकल चुके हैं दक्षिण अफ्रीका। तो जो काम दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज नहीं कर पाए थे, रबाड़ा ने कुछ हद तक थोड़ा बहुत प्रभावित किया था, लेकिन फिलेंडर और नोकिए का साथ उन्हें नहीं मिला। और वहीं ये जो भारतीय तिकड़ी है उमेश शमी और ईशान की, वो कहर बरपा रही है। इस बीच अगली गेंद, अच्छा उछाल उस गेंद पर, लेकिन उसे छोड़ दिया ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को डुप्लेसी ने। काफी आक्रामक फील्ड आज सुबह से ही लगा रखी है, बल्कि पारी की शुरुआत से ही लगा रखी है। और ये बात समझी भी जा सकती है, यदि 600 टीम आपकी टीम ने जोड़े हों तो आपको वो छूट होती है और आप उतनी आजादी ले लेते हैं कि हाँ अब मैं अटैकिंग फील्ड, आक्रामक फील्ड लगाऊंगा। तो आज भी 3 स्लिप है, गली है, पॉइंट है और कवर ऑफ साइड में, ऑन साइड में मिड ऑन है, मिड विकेट है और एक खिलाड़ी फाइन लेग बाउंड्री पर। इस फील्डिंग की जमावट के साथ मोहम्मद शमी जो अपना 7वां ओवर कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स छोर से, नॉर्थ एंड से, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट फाफ डुप्लेसी को और बहुत अच्छी गेंद आगे की तरफ पिच कराई हुई, मिडिल और लेग स्टंप पर थी, लेकिन उतना ही अच्छा उसे खेला। अपना बैट बिल्कुल
गेंद के पीछे लाकर उसे ब्लॉक किया ऑन साइड में मिड ऑन की तरफ। लंबे ऊंचे कद के ईशांत शर्मा ने गेंद को फील्ड किया और गेंद वापस आ रही है मोहम्मद शमी के पास। तो अब यहाँ पर एक पार्टनरशिप की, एक साझेदारी की जरूरत है। और हमने देखा था भारतीय पारी के दौरान की तीन शतकीय साझेदारियां बनी थी। एक शतकीय साझेदारी भी यदि दक्षिण अफ्रीका के लिए बनती है तो संभल सकती है दक्षिण अफ्रीका की टीम। इस बीच अगली गेंद और फिर से बहुत अच्छी गेंद, लगातार गेंद को स्टंप्स की लाइन में और आगे की तरफ पिच करा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हर गेंद खेलने के लिए विवश कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, चाहे वो मोहम्मद शमी हो, उमेश यादव हो या ईशांत शर्मा। They've been right on the money, haven't they, Sunil? Fact of the matter is that when we were discussing how much South Africa have gotten out of this pitch, how much they've tested India's batsmen, we did feel that the new ball, but the first hour of play on both occasions that they've had a chance to have a crack at South Africa, they've managed to do a final ball coming up of the 22nd over from Mohammad Shami. Faf du Plessis, the South African captain, taking strike. It's been a successful period this for India already. Final ball of the over is full of a length on middle stump, defended by du Plessis, which completes the 22nd over. South Africa 53 for 5. The predicament is to bat time, to bat a long innings against significant odds. And can they turn around a test match after being so far behind? There perhaps is no one better suited to that. Started against South Africa. And 17 glorious, elegant hundreds, 8,700 plus runs. None more special than what we can, I think, establish as the best knock that we've probably seen, watched, called at the Eden Gardens back in 2001. It is an absolute pleasure for all of us on All India Radio to say hello to VVS Lakshman. Lakshman, thank you for joining us. My pleasure, Rana. Yeah, it was a memorable test match against all odds, as rightly mentioned, 274 runs behind. Went on to win the test match, went on to win the series. One of the most memorable and satisfying innings in my career. Can Quinton de Kock or Faf du Plessis show that fight, show that grit, just like the way Rahul Dravid showed in Eden Gardens? That's such a good point that you make in terms of just having the support of someone else who can also contribute at the other end. And I'm just trying to think what the conversation would be like, Lakshman. So far behind in the test, already 1-0 down in the series. I'll just come to that as Umesh Yadav starts a new over. First ball to Quinton de Kock is full of a length and it's an uppish drive. It's gone in the air, but by the time Ravindra Jadeja runs around and picks it up from mid-off, there are a few oohs and ahs because it's induced an odd sort of false shot from Quinton de Kock. What sort of conversation? Keep it as simple as possible, but very important for you in your mind to be convinced that you can make a fight back into the game, because it's very important how you think. And with Rahul, who's known to play that long innings, absorb the pressure, tie down the bowlers, I think it was very easy to have that conversation with the great legendary Rahul Dravid. What is also important is not to, as Umesh Yadav lines up for another one. This time de Kock gets the cover drive dead right. He's played it all along the ground. It's full outside off. Umesh Yadav wouldn't mind that. Quinton de Kock wants to play his shots. It's gone through cover all the way for 4. So first runs for de Kock. Yes, Lakshman. yeah, it's also important to play your natural game, just like the way Quinton de Kock hit that ball to the boundary, because if you go into a shell with a long innings at your in your front, it's very important for you to go and play your natural game. The only way you can put pressure back on the bowlers is by rotating the strike, by making sure that the scoreboard is ticking, because if you go into the shell and allow the bowler to dominate and dictate terms, then you're going to lose your wicket very quickly. The third ball is again Umesh Yadav is targeting the line, right arm over across the left hand outside off stump, and de Kock just punches it to the man at cover, so he's keen to play his shots. Let's talk a little bit about this test in South African batting and whether you're disappointed with the lack of application that they've shown, Lakshman. South Africa have always come with batsmen that have at least tried to put up a fight, whether we look back at Hashim Amla, de Villiers, even far from the last over on difficult pitches, back further from Daryl Cullinan, who did well here, and they've always had batsmen that have given a challenge. What's your assessment of the way South Africa have batted through this series? I think firstly, all the great South African side I played against or we've seen had wonderful leaders. I'm really disappointed with the way Faf du Plessis has led this side, because he's an experienced player. Yes, there is a lot of inexperienced new players in this spot. There's no Hashim Amla, there's no Faf, there's no AB de Villiers. But as a captain, you set the tone. You lead by example. I thought he was very defensive in his field placements, the way he rotated the bowlers, not using or getting the best out of his strike bowler like Rabada.
Yeah, and that's something that India's bowlers have done so well. They've managed to test South Africa's batsman. Knows another ball right on the money outside of stump. Quinton de Kock this time lets it go short of a length to Ridhiman Saha. His captaincy is something we were speaking of. Even the call last evening to send out a night watchman instead of coming in himself at 30 for 3. Did you still sympathise with that one? I think that's always been the norm, Ronak. You see, whether it's South Africa or any other international side, they would not expose their main batsmen when there's just 10-15 minutes left, so that's the norm. So I'm not really surprised with that move, but what I was really surprised was when you have a strike bowler who was in good rhythm like Rabada, you want to use him in the short spells when the batsman is not yet set. But what we have seen even on the first day is he took a lone wicket in the first session and he bought him just 30 minutes before the tea interval. That means he allowed the number 3 batsman Pujara and Mayank Agarwal to get their eye in after the lunch session. So the way he used Rabada was something which surprised me. And let's be fair, I was just having this discussion yesterday with Irfan as well, a number of the guests that have joined us on this coverage, that this doesn't look like the most potent South African bowling that they've brought to India in all their tours. As the final ball of Umesh Yadav's over comes up, beautifully defended by Quinton de Kock off a length and off stump, which completes over number 23. South Africa 57 for 5. Umesh Yadav now 3 for 27, which is the other conversation I'd love to talk to you about, Lakshman. The depth that currently Indian cricket is blessed with. You have Umesh Yadav coming in, called up after an injury to Bumrah, plays his first test match, immediate impact, first test in a year, and has an immediate impact. This series without Hardik Pandya, there are still so many players that you can look at and think when India has everyone fully fit, that they've got so many options. This is a good time for Indian cricket, even test cricket. Yeah, and the main reason for that, Raunak, is the domestic structure we have got. I've seen Australia, I've seen South Africa have great domestic structure. The quality of the first class cricket was always high standard, but the reason why the transition from the good teams to the current teams in the South African or the Australian setup is because the quality in the domestic structure is missing. But as far as Indian cricket is concerned, I think we are very lucky to have excellent, robust their domestic structure. Rahul Dravid in charge of the India under-19, India A. So the strength of the national squad will always be really high when your bench strength is good. And we see in this test series, Bumrah, the leader of the pack, unfortunately missing out because of a stress fracture of his back, and Umesh Yadav gets opportunity and it picks up 3 wickets already. Yeah, and I've already seen that as Ishant Sharma starts a new over just outside of stump, half lets it go. But the friendship between Lakshman and Rahul keeps going, because we mentioned him twice already in the space of 2 overs. But understandably so, and I think, with no disrespect to the South African bowling, but if you want to pad up right now, you get a few runs against these guys. Just a fortnight short of your 45th birthday, I think, and still in good shape, VVS. Yeah, maybe not against Rabada, but definitely against the 3 spinners we saw in Vizag, and also we saw in this test match. They would not even get into a Ranji Trophy squad in India. Yeah, that's they're right. so substandard and mediocre. Diwali came early for Rohit Sharma in that last test with Dane Pete, and Lakshman's gift didn't go just to his timing. He's got the gift not just in articulating on the game in the language that you think is more popular in the South. Lakshman's become an ace Hindi broadcaster as well. So as the second ball of Ishant Sharma's first over of the day is clipped, a fine leg for a single by Faf du Plessis, I hand over to Sunil right there for a few chats with VVS in Hindi. बहुत बहुत धन्यवाद रौनक। और हमारे हिंदी श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस वक्त ज़हे नसीब, हमारा सौभाग्य कि हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में वो शख्स है जिनका परिचय मैं इस अंदाज में कराऊंगा कि भारतीय क्रिकेट टीम ने अब तक जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जितने भी युद्ध लड़े हैं, उसमें राम की भूमिका तो कई खिलाड़ियों ने निभाई है, लेकिन लक्ष्मण एक ही रहा है, और वो है VVS लक्ष्मण, जिन्हें वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण के नाम से जाना जाता है। और आज उनसे बातचीत करने का सौभाग्य हमें मिला है। लक्ष्मण, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाई है। ऐसे हालात जो इस समय दक्षिण अफ्रीका की टीम के हैं, पारी के हैं, ऐसे हालातों से कई बार गुजरी है भारतीय टीम, और उन हालातों से उबारा है आपने भारतीय टीम को, और न सिर्फ मिडिल ऑर्डर के साथ बल्कि लोअर ऑर्डर के साथ भी आपने वो करिश्मा करके दिखाया है। इस गेंद के बाद हम बात करेंगे। इस बीच आगे की तरफ पिच कराया, सही टप्पा, सही दिशा, और चकमा खा गए वहां पर डी कॉक, लेकिन कोई नुकसान नहीं। लक्ष्मण।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमेशा इस सिचुएशन के लिए ही इंतज़ार करता था, क्योंकि छोटे जेब से मेरे जहन में और मानसिकता में ये थी कि मुझे इंडियन टीम के लिए मैचेस जिताना है और मुश्किल सिचुएशन से जिताना है या मैच बचाना है। तो खुशकिस्मत था मैं कि मेरे करियर में काफ़ी बार ऐसे सिचुएशन में खेलने का मौका मिला है। देखिए, इस सिचुएशन में आपका चरित्र पता चलता है और देखिए, क्योंकि जब हालात एकदम मुश्किल हो, कंडीशंस मुश्किल हो, तो आप किस तरह अप्रोच करते हैं, किस मानसिकता के साथ अप्रोच करते हैं, उसके ऊपर निर्भर रहता है आपका जो सफल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि क्विंटन डिकॉक और फैफ डु प्लेसिस तो क्रीज के ऊपर है, उसी मानसिकता के साथ खेले, जिम्मेदारी के साथ खेले, संघर्ष करे, क्योंकि आसान नहीं होने वाला है। सामने 5 ऐसे गेंदबाज है जो मैच विनर्स है। तो अगर आप आसानी से हार मार लेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आप सफल नहीं हो सकते। तो मेरा मानना है कि ज़्यादा महत्व देते हैं टेक्निक के ऊपर, लेकिन अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सफल होना है तो माइंडसेट का महत्व बहुत ज़्यादा है, आपकी अप्रोच के ऊपर काफ़ी निर्भर करता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसीलिए कहते हैं कि बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो ऐसी कोशिशें आपने कई बार की है। एक और अहम बात जो इन दिनों भारतीय क्रिकेट में नजर आती है कि इस मैच में जसप्रीत बुमराह उपलब्ध नहीं है, लेकिन बावजूद उसके कोई उनकी बात नहीं कर रहा। उनकी कमी बिल्कुल खल नहीं रही, महसूस नहीं हो रही, और ये दर्शाता है कि भारतीय आक्रमण, भारतीय जो पेस अटैक है वो कितना सुदृढ़, कितना मजबूत हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। इस बीच अगली गेंद ईशांत शर्मा की और फिर से आगे की तरफ पिच कराई हुई, लेकिन इस बार गेंद के ठीक पीछे आकर बल्ले के बीचों बीच लेकर उसे खेला मिड ऑफ की तरफ। जाडेजा ने गेंद को फील्ड किया और वापस ईशांत के पास। जी, नंबर 1 पोजीशन में है भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट में। उसका मुख्य कारण यह है कि किस तरह गेंदबाजों ने प्रदर्शन किया। सिर्फ हम तेज गेंदबाजों के बारे में बात नहीं कर सकते। अश्विन, जडेजा बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। कुलदीप यादव है जो इस स्क्वाड में है, लेकिन प्लेइंग 11 में उनका जगह नहीं बन रहा है। देखिए, अगर आपको श्रृंखला जीतना है तो आपको आपके गेंदबाज के ऊपर काफी ज्यादा निर्भर करना पड़ता है। बैट्समैन गेम बोलते हैं हमेशा, ये बैट्समैन जरूर रन बनाते हैं, लेकिन अगर आप 20 विकेट नहीं लेते तो आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। तो मेरा मानना है कि जो मुख्य कारण है भारतीय टीम इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया, उसका कारण है कि 1 या 2 गेंदबाजों के ऊपर निर्भर नहीं करते। ओवर की समाप्ति अब देखना पड़ेगा कि उमेश यादव गेंदबाजी करेंगे या स्पिनर रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। Yeah, we're going to wait and see. Lakshman, it's been such a pleasure to have you, and I think our Ashwin's finally going to get a ball. He's been waiting for so long to have a ball. He's had the crack with Quinton de Kock at the crease as well. May not be the worst thing. Quick final words and predictions, Lakshman. When are we going home? Are we going to go home today? Are we going to go home tomorrow? Oh, don't be too greedy, Raunak. Maybe not today, but maybe tomorrow. I think in this match I foresee Virat Kohli enforcing the follow-on, because you got already 600 runs on the board. Indian team is playing with 5 bowlers, unlike Vizag where they played only with 4 bowlers. The weather is quite pleasant, so I foresee the South African following on this evening. Probably post-tea session you see India bowling again. Brilliant. Let's hope that if India bowl again, we'll have your company at some point soon. VVS, it's been such a pleasure. Thank you very much for joining us on All India Radio. As VVS Lakshman, the wonderfully gifted former India batsman, joining us in the All India Radio commentary box in Pune, as Ravichandran Ashwin readies to start his first over of this second innings. And he's going to start from the pavilion end. Right arm over the wicket, field in place for Ashwin is managed slip and managed leg slip, as well as a managed short leg, short mid wicket, mid off. There's a man at 45 for the sweep. There's a man at 45 on the offside for the cut, and a man at deep mid wicket who Ashwin's not quite pleased where he is. He's moving him to a deep backward square. So for the top edge for the sweep, he's got protection on the onside. Ashwin right arm over to Faf du Plessis, the right-hander, and he's fired the first one through. It's interesting that Ashwin has decided to go for a quicker one first up, and it's defended off the back foot and off stump by Faf du Plessis. So India well and truly on top, and we did have the pleasure of VVS Lakshman's company, who doesn't fancy South Africa's chances, and understandably so, with the scoreboard at 58 for 5. Second ball from Ashwin is slower and tossed up in the air. Faf du Plessis comes in on the front foot to defend it. It goes fine to the man at short third and Mohammad Shami, so no run. So 3 men catching. That slip, leg slip, short leg. Also managed short mid wicket, if you want to count him as a catcher. And
indicates the line's going to be straighter from Ashwin, more on the off stump. And this time a variation. He tries to bowl the carom ball, and Faf du Plessis has just worked it to forward short leg on the bounce. It's going to be watchful. The one good thing is, Sunil, that so far we've still not seen any demons in this pitch from the spinners, as Ashwin bowls a shorter delivery. This time tries, I think, what's a front of the handoff spinner, as against the conventional finger spin. And it goes on the back foot, does Faf du Plessis. There's a bit of turn, but it's slow turn, nothing alarming. Now next ball of the over, and Faf du Plessis tried to sweep that hard. It's full outside off stump. He's got his front pad outside the line of off stump, so not in danger of the LBW. But it's tossed up by Ashwin, and that's a good line to bowl. It ended up hitting Faf du Plessis on his ribs as he went down on one knee and couldn't get the timing. A little extra bounce as well. And Ashwin, who's brought in to the 25th over, which is not often. Often you see captains use Ashwin much earlier, much sooner. Final ball of the over, and it's a straight ball, middle off stump, coming into the right-hander. He goes on the back foot and defends it. So a maiden over for Ashwin to start. Completes the 25th over of this South African innings, and it keeps their score at 58 for 5. So Neil, it'll be interesting to know how often Ashwin's had to wait for 25 overs to bowl. Normally captains given the new ball, especially in the twilight of a previous day. Even this morning the seamers bowling so well, he'd be greedy and hungry for wickets as well. There are wickets for the taking here. जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से बल्लेबाजों को रनों की भूख होती है, उसी तरह से गेंदबाजों को विकेट्स की भूख होती है। और रविचंद्रन इस मामले में काफ़ी लालची है, और वो हमेशा यही चाहते हैं कि हर मैच में, हर स्पेल में वो विकेट निकाले। लेकिन आज एक बात देखकर बहुत अच्छा लग रहा है रौनक की आज दर्शकों की उपस्थिति पिछले दो दिनों की तुलना में काफ़ी अधिक। इस समय लगभग 12 से 14 हज़ार दर्शक नजर आ रहे हैं स्टैंड्स पे। इस बीच ईशांत शर्मा के ने ओवर की पहली गेंद और ओवर पे सी से ड्राइव किया पॉइंट की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए जडेजा द्वारा 1 रन और डीकॉक, उस 1 रन के साथ डीकॉक अब पहुंचे 4-5 पर, और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 59 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ जिन श्रोताओं ने अपने रेडियो या ट्रांजिस्टर सेट्स देर से खोले हों, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि 5 विकेट दक्षिण अफ्रीका की टीम खो चुकी है। पहला विकेट मार्करम के रूप में गिरा था, जो आउट हुए थे एलबीडब्ल्यू खाता खोले बगैर। उसके बाद विकेट मिला था डीन एल्गर का उमेश यादव को ही। बोल्ड उमेश यादव केवल 6 रन बना पाए थे डीन एल्गर। और तीसरा विकेट गिरा था बाबूमा का, जो मोहम्मद शमी ने अपने पहले ओवर की पहली ही गेंद पर हासिल किया था, और बाबूमा को रिद्धिमान साहा ने कैच आउट किया था। शमी की गेंद पर 8 रन बना पाए थे बाबूमा। और आज सुबह का पहला विकेट नोकिया के रूप में मिला, जब शमी की गेंद पर कोहली ने उनका कैच पकड़ा था। 3 रन बनाए थे नोकिया ने। इस बीच अगली गेंद, और इस बार थोड़ी सी ओवर पे सी और पॉइंट बाउंड्री की तरफ से खेला है 4 रन के लिए। बढ़िया शॉट इस बार फाफ डु प्लेसी के बल्ले से आता हुआ, खराब दिशा पर गेंद की थी और उसे सही नसीहत देते हुए पॉइंट बाउंड्री के बाहर खेल दिया फाफ डु प्लेसी ने। उस चौके के साथ दोहरी रन संख्या में 11 पर, और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 63 रन 5 विकेट के नुकसान पर। डीकॉक है 5 पर। तो उसके बाद जो विकेट गिरा था 5वां, वो डेब्रुआन का मिला था, और जिन्हें रिद्धिमान साहा ने कैच आउट किया था शमी की ही गेंद पर, और 8 रन डेब्रुआन, माफ कीजिएगा 30 रन बनाए थे डेब्रुआन ने। उमेश यादव की गेंद पर वो कैच पकड़ा गया था रिद्धिमान साहा द्वारा। इस बीच ईशांत शर्मा हमसे दूर भागते हुए कमेंट्री बॉक्स छोर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट डु प्लेसी को ये गेंद अच्छी गेंद थी, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद थी, और गेंद को अपने पंजों पर उछलकर सीधे बल्ले से सामने की तरफ खेला और गेंद को फील्ड किया गया मिड ऑन पर, और गेंद वापस आ रही है ईशांत शर्मा के पास। तो ईशांत शर्मा के लिए 2 स्लिप है, गली है, बैकफुट पॉइंट है, कवर है ऑफ साइड में, और मिड ऑफ है, और ऑन साइड में मिड ऑन, मिड विकेट, और एक खिलाड़ी फाइन लेग बाउंड्री पर। तो इस फील्डिंग की जमावट के साथ ईशांत शर्मा, जो कप्तान विराट कोहली से लगातार बातचीत कर रहे हैं, विराट कोहली जो मिड ऑफ पर फील्डिंग कर रहे हैं और लगातार बात कर रहे हैं ईशांत शर्मा से कि क्या किया जाए, किस तरह से एक और विकेट हासिल किया जाए। इस बीच अगली गेंद ईशांत शर्मा की आगे की तरफ पिच कराई हुई, और उसे
ठीक पीछे आकर रक्षात्मक ढंग से खेला। और रौनक यहाँ पर जो जिस पोजीशन पर विराट कोहली खड़े हैं, मिड ऑफ मिड ऑन, ऐसा कहा जाता है कि कप्तान के लिए ये सबसे अच्छी पोजीशन होती है, क्योंकि वो उस पोजीशन से लगातार अपने गेंदबाज के संपर्क में रह सकता है और उसे कुछ न कुछ हिदायत या निर्देश दे सकता है। It became the position for Imran Khan to seat himself in 92. He decided he's going to tell his bowlers exactly what to bowl on every ball. So it's almost become customary that if the captain wants to be in the bowlers here, he stands at mid-off. But I wonder how many bowlers would enjoy listening to the captain again and again, especially a senior bowler like Ishant Sharma, and how much he'd want to hear the captain then. Next ball of the over is just left by Faf du Plessis outside the off stump for length. Virat Kohli continues to be in the ear of Ishant Sharma. तो ईशांत शर्मा का ये 7वां ओवर है, 6ठा ओवर है बल्कि। ईशांत शर्मा ने इससे पहले 5 ओवर किए हैं, कोई मेडन नहीं, 13 रन। और